Hello everyone and welcome back to my new vlog. So the morning has started with a lot of cuddles and too much love because Yuvi and Prashant will be leaving today. So I know I would be missing Yuvi a lot. So जितना हो सके उतना प्यार बटोर रही हूँ सुबह सुबह तो कडलिंग ऑलरेडी चालू हुआ है हमारा Me, 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 you. Daddy and me. Are you gonna miss me? Yes, How much? very much. How much? Very much, pagal. very much, pagal. How much? How much you gonna miss? Very much. Kiss. తెలుపుందా ఏంటి హగ్ అంటే అక్కొస్తున్నా Mama, See you soon pan puredala. see you soon. Please subscribe pan. Please subscribe Super Mom Disha. Bye. Bye. So after they left, I just realized that यूवीर एक पैकेट छोड़ के गया था जो डैडी ने उसके लिए चॉकलेट्स वाला लाया था एंड देन आई इमीडिएटली कॉल्ड देम एंड इन्फॉर्म देम कि वो पैकेट छूट गया है, प्लीज़ उसको लेके जाओ. उसमें पूरा खूब सारा चॉकलेट्स था और उसको इधर रख के कुछ फ़ायदा नहीं था. सो दे टर्न्ड ऑल द वे एंड केम बैक टू पिक अप द पैकेट. ಈ ನಾ ಅರ್ಧ ಮಂಡೆ बाय. और वो लोग जाने के बाद मेरा मूड तो पूरा ऑफ ही हो गया था क्योंकि यूवी को छोड़ के इतना दिन रहना आई वॉज काइंड ऑफ फीलिंग इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता मेरे लिए. तो मेरा मूड थोड़ा फ्रेश करने के लिए मम्मी ने बोला कि लेट्स गो टू क्लोज बाय आइसक्रीम बोंडा फैक्ट्री. सो दैट इज़ वाई हम लोग गए आइसक्रीम खाने के लिए. मूड तो बिल्कुल नहीं था बट हाँ ठूसा तो बहुत सारा ठूसा, लेकिन वापस आके फिर से वही मूड में आ गई. So finally we have reached our destination. So this is Bonda factory which is very close to my house and यहाँ पे मस्त नारियल का आइसक्रीम बनता है. So this is a branch of Naturals itself and Naturals का जो भी आइसक्रीम बनता है ज़्यादातर यहीं पे बनता है. जो मैंगलोर में बनता है वो सब यहीं पे बनता है. So here we are in the line waiting for our turn to have the yummylicious coconut flavored ice cream. Cha. Ooh. What is this? Pina colada. ಒಂದು ಕಾಫಿ ಲೋವಾ Oh, different. ಸೇಮ್ Ask him 2 spoons ata. Cheers. Cheers. How is it? Good. तो यहाँ पे जैसे आप लोगों ने देखा कोकोनट आइसक्रीम के साथ कोकोनट वाटर भी मिलता है ग्लास में, विच इज़ ऑल्सो फ्रेश एंड नाइस.
टेंडर कोकोनट ಬೇಕು ಇದೆಯಾ टेंडर कोकोनट तो जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि घर का कुछ काम चल रहा है एंड दिस इज़ द स्टेटस या इतना काम हुआ है अभी फ़िलहाल तक एंड वी आर सुपर बोर्ड एट होम क्योंकि टीवी नहीं देखना है कुछ नहीं एंड फाइनली लुक व्हाट्स हियर सो प्रेगनेंसी के लास्ट फ्यू मंथ्स यही रहता है वी हैव रिलेटिव्स कजन्स एक्सेट्रा कमिंग ओवर एट होम एंड यू नो गेटिंग मी स्टफ्स मतलब खाने के लिए स्वीट्स हो गया या कुछ भी चिकन में कुछ या कुछ भी दे गेट मी थिंग्स टू ईट एंड जो मेरा फेवरेट है वो सब वो लोग ला के मेरे को देते हैं बिकॉज प्रेगनेंसी का लास्ट फ्यू मंथ्स है आई डोंट नो दिस इज़ सम काइंड ऑफ ट्रेडिशन दैट वी फॉलो मेरे को इतना भर के लाया है सब लोगों ने आई एम सो थैंकफुल टू एवरीबडी सो पहले वाला शी वॉज माई ग्रैनी एंड दिस इज़ अनदर आंट ऑफ माइन हुज बॉट मी स्टफ्स उसके बाद भी बहुत लोगों ने लाया है एंड आई एम थैंकफुल टू एवरीबडी फॉर ऑल दोज हु आर गेटिंग मी थिंग्स टू ईट हाँ मैं खा तो नहीं पा रही हूँ लेकिन फिर भी दैट लव फॉर मी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट तो इसीलिए मैंने रिकॉर्ड किया इसको भी सो या जस्ट सी व्हाट एंड ऑल मतलब इतना लेके आ रहे हेलो एवरीवन सो इट्स बीन 2 days since युवी एंड प्रशांत हैव गॉन बैक एंड पहले दिन इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी पहले दिन तो मैंने उसके बाद ज़्यादा शूट भी नहीं किया एक्चुअली सुबह से जब वो गया उसके बाद शाम तक तो मैं ठीक ही थी कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था एंड देन कम्स हिज कॉल उसने कॉल किया और बोला कि मम्मा आई एम मिसिंग यू बस वो एक चीज़ उसने बोला तभी मेरा जो रोना धोना चालू हो गया था आई डोंट नो व्हाई आई जस्ट कुडंट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम क्राइंग रो रही थी आई डोंट नो व्हाट वाज द प्रॉब्लम लाइक दिशा स्टॉप इट आई कुडंट कंट्रोल माय यू नो इमोशंस एट ऑल आई डोंट नो दिस इज प्रेगनेंसी का साइड इफेक्ट्स और व्हाट आई डोंट नो बट आई स्टार्टेड मिसिंग हिम लाइक एनीथिंग आई वाज लाइक थिंकिंग कि बहुत बड़ी गलती किया क्या मैंने उसको जाने दिया तो बट या नाउ इट्स ठीक है नाउ आई नो कि now he's gone there and he's enjoying now my sister-in-law and all have come home and all that तो ठीक है अभी थोड़ा बेटर फीलिंग है ऑल्सो वो अभी जो स्कूल जा रहा है तो उसकी वजह से उसका आधा टाइम तो स्कूल में ही जाता है फिर आके होमवर्क ये वो फिर नीचे खेलने के लिए जाते हैं एंड ऑल दैट सो नाउ ही इज़ बाय हिमसेल्फ अभी he is not that you know missing me kind of so बस वही चाहिए मुझे आई डोंट वांट हिम टू मिस मी टू मच नहीं तो मेरे को बहुत गिल्टी वाला फील आता है बट हाँ अगेन मिसिंग अनदर यू नो month of school is again a big loss for him because उसको terms भी है and I can't keep him with me you know for like 2-3 months like that because he's in first standard now अगर वो senior KG में रहता फिर भी you know making him stay with me would be okay मतलब उतना फ़र्क नहीं पड़ता but because he's in first standard उसको थोड़ा studies को seriously लेना पड़ेगा that is why I have sent him even though I didn't want to send him so yeah now he's there and school जा रहा है and everything is in place मिसिंग तो होता है यू कैन हेल्प इट यू आपका बच्चा है मिस तो करेंगे आप बट दैट्स ओके वही डिलीवरी के टाइम में ही विल बी बैक अगेन दिसंबर स्टार्ट को विल बी बैक अगेन सो नथिंग टू वरी वो दिन तो फटाफट जाएगा या दिसंबर स्टार्ट को आएगा अगेन ही विल मिस अनदर मंथ ऑफ स्कूल
at least 20 days of school he'll miss again. So that is why I thought at least ये एक महीना वो चला अगर गया school गया तो something at least he'll benefit out of that. And good I sent him because उसका second term भी आ रहा है. So before he comes he'll answer his second term and he'll come to Mangalore. So yeah, miss तो बहुत कर रही हूँ, क्या करें. So abhi there are like people coming home and as I showed you all, my granny, my aunt, also my cousin had come. तो वो लोग आते टाइम ऐसा वो लोग जो ला रहा है उसका एक्साइटमेंट नहीं है, उसको ही तो घर पे आ रहा है उसका एक्साइटमेंट है. थोड़ा टाइम पास होता है एंड बातचीत करते करते अच्छा लग रहा है. सो थोड़ा माइंड भी डाइवर्ट हो रहा है. सो या सो दैट्स अ वेरी cute wala tradition I can say that we have ki last few months of pregnancy people are coming and pampering you, getting you stuffs, fruits and it's something which you love the most. वो सब लाके वो हम लोग को दे रहे हैं. So getting something is not important but with that love they come home and they tell ki this is your favorite, right, this is what you like. So वो एकदम दिल को छू जाता है. यू रियली फील लाइक या पीपल केयर फॉर यू. some things really make you feel loved, and yeah, this is the occasion that is really making me feel loved, and the pamperings and everything that is going on is amazing. सिर्फ एक ही कमी है, my son and my husband is not here, that's it, and everything is going on super fine, super smooth and super nice. So yeah, now though I was telling Niranjan also, I called Niranjan and I was messaging Niranjan and I was telling Niranjan, I am done baking, I need to pop now. And he's like, Akka, please, you need to have patience, it's too early to say so, at least 2-3 weeks more. So yeah, waiting to pop. I am done. The only problem is I can't sleep. I really can't sleep. I am falling asleep any part of the day and it's just for 5 minutes or for 10 minutes and the rest of the day I am only tired. Other than tired, I'm nothing. So even office से मेरा maternity जल्दी चालू होने वाला है. I'm going to put my letter up there and for maternity leave. So many things going on. My checkups are yet to go. After 20th I'll start the regular thing, etc. Everything is going on fine. So just pray for me that everything goes on fine, अच्छे से हो जाए. And yeah, keep your prayers with me. Pray for me. Just थोड़ा अपने प्रेयर में मेरे को याद रखना, दुआ में याद रखना. जो भी है, let her go through it nicely. So yeah, that's it for today's vlog, guys. If you all did like my vlog, please don't forget to like, share, comment and subscribe. Please don't go without subscribing. Even if you have subscribed, please don't forget to click on that bell icon so that you all immediately get a notification as soon as I upload my videos. And I also hope that you all are watching the shorts and reels that I am uploading. I hope you all are enjoying it as well. So that's it for today's vlog, guys. Hope to see you all in the next vlog. Till then, toodles, show some love.